96 घंटे, जी हाँ 96 घंटे बीत चुके हैं। मिर्जापुर की बेटी पर जानलेवा हमला करने वाला अब्दुल और सैफ अब भी फरार है। पुलिस घर घर तलाशी ले रही है। अब्दुल पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन धर्म परिवर्तन कराने का आरोपी अब्दुल, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। हिंदू संगठन गुस्से में है, आक्रोशित है, पीड़ित परिवार गुस्से में है। उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है, अब्दुल का एनकाउंटर हो और उसके घर बुलडोजर एक्शन लिया जाए। मिर्जापुर के आरोपी ने कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया था, अब अब्दुल का परिवार ही क्यों उसके लिए फांसी की सजा मांग रहा है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में जानिए। वो मारा है, पूरा जान से मारने का उसका प्रोग्राम था। धर्म परिवर्तन करा के जो लड़की नहीं मानी तो वो मार दिया, और उसने तो ये समझ के मारा था कि मतलब जान चली गई। कार्रवाई हो, बुलडोजर कार्रवाई हो, इनकाउंटर उस लड़के का हो और हमें सुरक्षा दी जाए। जब तक हमको मुजरिम मिल नहीं जाता है, आरोपी अब्दुल, मुख्य आरोपी अब्दुल नहीं मिल जाता है, तब तक हमको कोई शांति नहीं है और हम कोई कार्रवाई नहीं मानते जब तक अब्दुल नहीं मिल जाता। अब्दुल की जानकारी नहीं भाई, अब्दुल कहीं भी मिले सर उसको फांसी दे दे। अब्दुल गलत केस है, मगर इसके साथ हम लोगों के सजा ना दे। कोई नहीं, हम लोगों का सिर्फ खाली एक हम बचे, एक मेरी लड़की बची है जेठानी के, बाकी सब लोग को उठा लेके चले गए हैं। 96 घंटे बीत चुके हैं। मिर्जापुर का मुजरिम अब्दुल उर्फ सैफ अभी तक फरार है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई हैं। अब्दुल पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। हर उस जगह पर छापेमारी की जा रही है जहां आरोपी के छिपे होने की उम्मीद है। एक एक घर में अब्दुल की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक अब्दुल का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो देखिए यहाँ घर में है नहीं ना, निकलते ही नहीं हम लोग। कोई बात नहीं, आपके यहाँ आपके घर में जो 2 लोग हैं ना उनके दोस्त हैं। हम तो उसको जान भी नहीं करते सर, आपका दोस्त है। बताया भाई, पीछे बताया तब ना हम आपके घर आए। ठीक है, बता दिया, जबरदस्ती कोई कर रहा है कि दोस्त हम इसको जानते नहीं। बिल्कुल नहीं, आप फिर चेक कर सकते हैं। ये लड़का आया नहीं ना आपके घर में, एकदम श्योर है? थोड़ा सा आसपास में दिखवा दीजिए। तो पहचानती है? अरे तो कोई बात नहीं, आते होंगे तो पहचानती होगी ना। देखते नहीं है। सलीम कहाँ गए? कोई इस तरह का आदमी कहाँ गया? उसको समझाने लगा कहा कुछ नहीं देखा है, हमने देखा है, आया नहीं है ना, नहीं बैठे हम इधर नहीं आता है। अब्दुल ने हिंदू लड़की के घर में घुसकर उस पर ब्लेड से हमला किया था। पुलिस इस केस में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसे लेकर पीड़ित परिवार और हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। बीते 5 दिसंबर को मिर्जापुर के कटरा कोतवाली में हिंदू युवती के धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर मुस्लिम युवक सैफ ने उसका ब्लेड से गला रेत डाला और फरार हो गया। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। अस्पताल में भर्ती युवती की हालत गंभीर है। यूपी के मिर्जापुर में शुक्रवार देर शाम उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब पुलिस को पीसीआर के जरिए ये जानकारी मिलती है कि एक युवक ने, एक मुस्लिम युवक ने घर में घुस करके एक हिंदू लड़की पर ब्लेड से वार किया है और उसको मारने की कोशिश की है। जी हाँ, हम इस समय मिर्जापुर के गणेशगंज इलाके में मौजूद हैं, जहां पर पीड़िता के घर के ठीक सामने हमारी मौजूदगी है। और पीड़िता बताया जाता है कि उस दौरान शुक्रवार की देर शाम घर में अकेली थी और उसी दौरान जो आरोपी है अब्दुल उर्फ सैफ, वो लगातार उसके संपर्क में रहने की कोशिश कर रहा था। ये भी बताया जा रहा है कि वो जबरन धर्म परिवर्तन की बात कर रहा था और जब पीड़िता ने इससे मना किया तो आरोपी ने उसके ऊपर ब्लेड से वार किया और उसको जान से मारने की कोशिश भी की, जिसके बाद इस पूरे मामले में मिर्जापुर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और कुल 9 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। लेकिन लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर के काफी ज्यादा है कि मुख्य आरोपी अब्दुल उर्फ सैफ अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है।
जिस जगह आरोपी ने युवती पर हमला किया वो काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है। ऐसे में जिस तरह अब्दुल ने घर में घुसकर युवती पर अटैक किया वो काफी हैरान करने वाला है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है तो उसके घर रामबाग कुरैश नगर में राजस्व कर्मियों ने पहुंचकर मकान की नापी करना शुरू कर दिया। यानी अब्दुल के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। दरअसल ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सब्जी मंडी लगती है। अभी भी आप देखिए कि यहाँ पर सब्जी मंडी लगी हुई है और ऐसे में अगर कोई भी आरोपी आता है, इस तरीके के दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देता है और उसके बाद फरार होता है, तो निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लाजमी है। हिंदू संगठनों ने जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। मिर्जापुर में मार्केट के इलाकों में मशाल जुलूस निकाला गया है और आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। आरोपी के घर की जो सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं उनके द्वारा पैमाइश भी कराई गई है, लेकिन इस तरीके का मामला आना निश्चित तौर पर हिंदू संगठनों को लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा है, काफी ज्यादा उबाल है और हिंदू संगठन चाहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो और उसके बाद ही उनका यह प्रदर्शन बंद होगा। जिस वक्त पीड़िता पर अटैक हुआ वो घर में अकेली थी। अब्दुल मौका देखकर घर में घुस गया और इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। आप पिताजी हैं, आपको जानकारी जब पूरे मामले की हुई तो आपने किस तरीके से इस पूरे मामले में रिएक्ट किया? हमको असल में हम 5-10 मिनट थे नहीं, हम भी चौराहा में चले गए थे। वो खोल के कुंडी चला गया था अंदर से बंद करके हादसा कर दिया। वो आखिर में हम थे नहीं, 2 मंटू चाय वाला था, एक और बगल से 2 लोग, उन्हें हादसा के बीच में उन्हें छोड़ाया हटाया। आरोपी अब्दुल पीड़ित लड़की पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। वो लड़की से शादी भी करना चाहता था, लेकिन जब लड़की ने इससे इनकार किया तो आरोपी ने उस पर अटैक कर दिया। लड़की के घर पर जगह जगह हमले के सबूत हैं, जगह जगह खून बिखरा हुआ है। अब आपको बताते हैं आरोपी कैसे घर में दाखिल हुआ और कैसे वारदात को अंजाम दिया। मिर्जापुर में हम पीड़िता के घर पर मौजूद हैं और किस तरीके से दुस्साहसिक वारदात को आरोपी अब्दुल ने अंजाम दिया था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब्दुल घर के अंदर घुस आता है, बाहर 1 घंटे तक बैठा रहता है, खुद को घोड़ी वाला बताता है क्योंकि पास में ही शादी हो रही थी, और अंदर से आकर के इस जो मकान का लॉक है उसको अंदर से लॉक कर देता है और उसके बाद वो पहुंच जाता है घर के अंदर। घर के अंदर पहुंचने के बाद वो इस दुस्साहसिक वारदात को न सिर्फ अंजाम देता है बल्कि उसके बाद यहां मौके से भागने में कामयाब भी हो जाता है। सबको मारते हुए, धमकी देते हुए गया है, जबरन शादी करना चाह रहा था, धर्म परिवर्तन करना चाह रहा था। और ये देखिए जो यहाँ पर निशान है ब्लड के वो अभी भी हैं और ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। देखिए जो ब्लड के स्ट्रेन्स हैं, ब्लड के जो निशान हैं वो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो बताता है कि किस तरीके से पूरी दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। कैमरामैन को बोलूंगा कि जरा वो ऊपर आए और उसके बाद दिखाएं कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। जहां तक आप देखेंगे वहां तक आपकी इस नजर में बाकायदा देखिए ब्लड के स्टेन्स नजर आएंगे और इसीलिए पुलिस ने यहाँ पर सारी चीजों को निकाला है। तो ये बताता है कि किस तरीके से दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया आरोपी अब्दुल ने। लेकिन पुलिस ने अभी फिलहाल इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब्दुल की चूंकि गिरफ्तारी नहीं हुई है इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों में नाराजगी है और नाराजगी की वजह से हिंदू संगठन जो है वो इस समय प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पर पीड़िता के ऊपर जबरदस्त तरीके से वार किया गया था। अंदर ही वार किया गया था उनके ऊपर। पीड़िता के जो पिताजी हैं जी, यहीं पे पीड़िता बैठी, यहीं बैठी थी। अभी भी देखिए किस तरीके से ब्लड का जो स्टेन्स हैं वो अभी भी यहीं पे हैं। हर जगह आपको ब्लड नजर आएगा, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ खून नजर आएगा। हिंदू युवती पर हुए हमले के बाद मिर्जापुर में माहौल तनावपूर्ण है। देर रात हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। हिंदू संगठनों की मांग है कि आरोपी को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।
हमारे मिर्जापुर इतना शांत एरिया था, कभी हम लोग सोचते नहीं थे कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। लेकिन चूंकि ये एरिया हिंदुओं का एरिया है, यहाँ इतना मन बढ़ के और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किया गया, कृत्य कार्य किया गया है, उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं कि इस प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ होना नहीं चाहिए था। अगर हुआ है तो उसकी ऐसी घोर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे बुलडोजर का एक्शन हो, चाहे इनकाउंटर का एक्शन हो, चाहे फांसी का एक्शन हो, लेकिन ऐसा दिया जाए कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करें कि इस घटना के करने के बाद सपने में याद करें कि इस घटना करने के बाद अंजाम क्या होगा। इस घटना को आप पूरे देंगे, अभी जानकारी लेंगे तो इसमें कई तथ्य ऐसे जुड़े हुए हैं जो लव जिहाद से जुड़े होंगे, धर्म परिवर्तन से जुड़े होंगे और सारी चीजें खुल के आएंगी और प्रशासन अपना काम कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है वो सभी आरोपी सैफ के रिश्तेदार हैं। रुस्तम खां आरोपी सैफ का जीजा है। गुलाम साबिर ये भी आरोपी का दूसरा जीजा है। शमायरा और शायरा ये दोनों सैफ की बहन हैं। निजामुद्दीन और बदरुद्दीन ये दोनों आरोपी के चचा हैं। वारिस सैफ का दोस्त है। अब्दुल फरार है, रिश्तेदार जेल में है। अब उसके घर में सन्नाटा पसरा है, कुछ महिलाएं ही बची हैं। अब्दुल के रिश्तेदार भी कह रहे हैं कि पुलिस उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। हालांकि उनकी गुहार है कि पुलिस उन लोगों को न परेशान करे जिनका अब्दुल से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल अब्दुल जिस घर में रहता है उसमें उसके 3 रिश्तेदार भी रहते हैं। ऐसे में इन्हें डर है कि अगर बुलडोजर एक्शन हुआ तो उनका मकान भी एक्शन के दायरे में आ जाएगा। अच्छा, ये घर में अब्दुल का ही पोर्शन है, बाकी लोग का ही पोर्शन है कि सिर्फ अब्दुल का घर है? नहीं, ये ना उनके चचा का घर है। अब्दुल का इसमें 4 आदमी का हिस्सा, 3 आदमी का है। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं भैया जहाँ वो लड़का मिल जाए उसको फांसी दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, हम लोगों का अन्याय मिले। हम लोग उनके साथ कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ खाली एक नाम के वजह से हम लोग उनके साथ हो गए हैं कि ये हमारा ये जेठानी का लड़का है। आप लोग भी चाहते हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो? एकदम कहीं भी ना, हम तो सोच रहे मिले सर, हम उसको खुद उसकी अपनी फांसी हम उसके हाथ खुद अपने आप को दे के आप लोगों के कर दे। हम सोच रहे कहीं भी मिले उसकी कत्ल कर दिया, जब मार डाला जाए। इसका गलती की, गुनाह की है सर। कभी आप लोग को जानकारी हुई थी कि अब्दुल ऐसा कुछ करना चाह रहा है? हमसे लोगों से बोल चाल नहीं थी सर, बस हम लोग आते रहे जाते रहे, बस यही ना, बस यही रास्ता 3 आदमी का था, आते रहे जाते रहे। न्याय की बात है वो लोग कर रहे हैं। फिलहाल जो पूरा घर है इसमें 3 लोगों का पोर्शन है। अब्दुल भी यहीं पे रहता था और उसके परिवार के जो बाकी लोग हैं वो भी यहीं पे रहते थे। आप लोग भी यहीं पे रहती हैं? जी रहते हैं, हम अपना बनवा कर रहते हैं। हम लोग से कोई ताल्लुक नहीं, हम लोग बनारस की रहने वाली हैं सर। अब्दुल का ये वाला पोर्शन है? नहीं, ये अब्बास का है। अब्दुल का ये बगल वाला है। ये बगल वाला पोर्शन है। फिलहाल जो लोग हैं बता रहे हैं कि अब्दुल का ये पोर्शन है और फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है वो अब देखिए कि किस तरीके से खाली चूने की जो जगह है यहाँ पर किसी तरीके से सीमेंट लगा कर इसको कर दिया गया है। यहीं पे फिलहाल अब्दुल अपने परिवार के साथ रह रहा था। मिर्जापुर में लव जिहाद के इस मामले को लेकर शहर में माहौल तनावपूर्ण है। अगर जल्द ही आरोपी अब्दुल और सैफ की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हिंदू संगठन और भी उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। एसआईआर और चुनाव सुधार पर लोकसभा में राहुल गांधी बोल रहे हैं, जरा सुनिए। Why Mahatma Gandhi laid such emphasis on Khadi? Why was it that he framed the entire Indian freedom struggle around the concept of Khadi? And why is it that he only wore Khadi? Because Khadi is not just a cloth. Khadi is the expression of the people of India. It is the imagination, it is the sentiment, it is the productive force of the people of Aaj Pehnao Khadi. It is the expression of the people of India. Speaker sir, whichever state you go to, you will find different fabrics. There's the Himachali cap, Assamese gamcha, Banarsi sari, Kanchipuram sari, Naga jacket, and you will find
that all these fabrics represent the people. When the people of Assam give you the gamcha, they're not just giving you a piece of cloth. They're giving you an expression. They're giving you a piece of their history, their tradition, their future, their imagination. It's the same when the Nagas wear their jacket. When they come and see us, they make us wear the jacket because they want us to be embraced by the fabric. But Speaker Sir, these fabrics are beautiful. But if you look slightly deeper and you look closely at the fabric, you will find that each one of them has thousands of little threads embracing each other. A Kanchipuram sari might have a golden thread, but the golden thread means nothing without the green thread or the yellow thread near it. The other thing to notice about the sari or any other fabric is that all the threads are equal. No one thread is superior to another thread. They all come together. The threads cannot protect you. The threads cannot keep you warm. But when they come together as a fabric, they can keep you warm, they can protect you, they can express what you have in the heart. Speaker Sir, in the same way, our nation is also a fabric. It's a fabric made up of 1.4 billion people, and the fabric is woven together by the vote. Let me repeat it. It is a fabric of 1.5 billion people, and it is woven together by the vote. Everything that we see, in fact, this house where I'm standing today, the Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabhas across the country, Panchayats across the country, none of them would exist if the vote did not exist. We talk with great pride about HAL, BHEL, ONGC, Tejas, Chandrayaan. We have a list of things we say. Not one of those would exist without the vote. Speaker Sir, it is the idea that every thread, every person in the Union of India is equal that disturbs my friends in the RSS. They are happy to see the fabric, but they cannot stand the idea that every single person in the fabric of our country, regardless of what religion they come from, regardless of what community they come from, regardless of what language they speak, should be equal. Because they fundamentally do not believe in equality. They believe in a hierarchy, and they believe that they should be on top of that hierarchy. Speaker Sir, on the 30th of January, 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. Today, our friends do not embrace him. Today, our friends
have pushed him away. It's an uncomfortable truth. But that's not where the project ended. You see, as I said, everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project, after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. So what is this, sir? सर अभी नहीं पहना हुआ आज I'm doing. मैं बुलाता हूँ प्लीज बैठिए So प्लीज sir, आप बोले पर हाथ मत जोड़े sir, these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. कितना खादी पैसे थोड़ा बता दे So these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. My friends don't like the connections I'm making. They're disturbed by them. It's obvious. Speaker, sir, so after the father of the nation was assassinated, his vision of an equal India, of an India where institutions belong to the people, had to be destroyed. And so the process started, and the RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case. Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications, it does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य एक मिनट माननीय सदस्य चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है सर ये मैं उसी पे कर रहा हूँ आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम ले एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है एलओपी का मतलब नहीं आप जनरल बात बोलो आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात सर हम लोग सुनना चाहते हैं सर स्पीकर सर हम लोग सुनेंगे शांति से हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं और ये आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं धमकी देंगे आप हम लोग सुनने के लिए बैठा है अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ हम सुनने के लिए बैठे हैं अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है समय बहुमूल्य है समय का मर्यादा भी है सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का कोई अच्छा ज्ञान दे सुझाव दे सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं मेरा एक सीमित अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से आप विषय पर ही रहिए हम लोग सब बैठे हैं गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो
विषय तय किया गया है उसे क्या मतलब है? अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष? The discussion, one second. The discussion is about the vote and electoral. The discussion is about the vote. एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य मैं बैठे बैठे अनऑफिशियली बोल रहे हैं, उस विषय बोल रहे हैं, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है। Speaker sir, I want to make it very clear. Please. Speaker sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. I have done absolutely nothing wrong. I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. So, the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third institute, there are many more. I can go on. And the third institutional capture. What is this? मानिए प्लीज मानिए। And the third election, the third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. Now, I'm not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections. But I want to ask three questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage
India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question. No Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the election commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? The answer given is it is a question of data. It is not a question of data. It is a question of stealing the election. Now, what is the result of this institutional capture? What is the result of controlling the Chief Election Commissioner and the Election Commission? First of all, we have a set of election campaigns that are tailored for the Prime Minister. 3-month, 4-month, 5-month long campaigns are taking place so that the Prime Minister's schedule can be fitted in to the program. Second, we have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. Please. No. 22 times this lady appears. एक मिनट प्लीज एक मिनट। आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक नहीं, जैसे सदन नहीं चलेगा। नो, गलत तरीका है आपका, नहीं होगा। आप ले रहिए, आप ले रहिए। नहीं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप पहले अपने सदस्यों को समझाइए। नहीं चलेगा, नहीं, ठीक नहीं है। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप सर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने सदस्यों को गरिमा समझाइए। सर, बट ये तरीका आप इतने सालों तक यहाँ पर हैं, ये तरीका उचित है क्या? सर, विरोध का तरीका होता है, लेकिन ये उचित तरीका नहीं है। तरीका इधर भी हो, नो, उधर का तरीका क्या है सर? नो, सबका तरीका उधर से होगा, उधर से भी बोलेंगे, इधर से बोलेंगे, सब जगह से बोलेंगे। Speaker sir, I don't agree with the showing of photographs here, but it is a reflection of our democratic structure. This is what is happening in our democracy, that you're not allowing us to show. This Brazilian woman
has appeared 22 times on the voter list in Haryana. And not only that, there is one woman whose name has appeared 200 times, more than 200 times in one booth in Haryana. And it is very clear, and I have proven without doubt, that the election of Haryana was stolen and the theft was ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. Now, nowhere has the Election Commission answered my questions. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. And there is clear proof which I have put in front of the country. Right? But the Election Commission has no answer to these questions. And that is the result of the complete capture of the Election Commission by the people across the aisle. By the way, you're talking about SIR in Bihar. Let me say something about SIR in Bihar. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar, in the voting list? If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. Now, so what I'm putting on the table is, it is very clear that you've captured the institution. I've shown the mechanism of that capture. I'm also showing you how the Election Commission is doing things that are completely out of line. I'm not getting any answers. Right? So now, let us come to how, when we are talking about electoral reform. Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine-readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTVs, CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law, and we are going to change it retroactively, and we are going to come and find you. Right? So this is the situation that the country is faced with. You know, everybody says to us, India is the biggest democracy. Actually, I was thinking today, we're not just the biggest democracy, we're the greatest democracy. And I'm not saying it just like that. I'm saying it, America calls itself the oldest democracy. But the democracy that weaves together the largest number of people, the largest diversity of people, the largest number of languages, the largest number of states is this. And so our most powerful asset, the thing that stitches together the entire concept of modern India,
stitches together the fabric of modern India, brings people together, allows them to build this great nation, is being attacked by these people. They're destroying it. You know they're destroying it. I know they're destroying it, and they know they're destroying it. And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. Thank you. राहुल गांधी लोकसभा में एसआईआर इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा के दौरान सीधे बोल रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी कदम है वोट चोरी, और बीजेपी देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है, तमाम एजेंसीज पर कब्जा जमा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सदन के भीतर एसआईआर और इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा हो रही थी। उसमें एलओपी राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया और उसके बीच उन्होंने कहा है कि वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कदम है, वोट चोरी एक एंटी नेशनल काम है। साथ ही ये भी बताया कि जो बड़ी एजेंसीज हैं उस पर किस तरह से बीजेपी अपना कब्जा करने की कोशिश कर रही है, किस तरह से नियमों में फेरबदल किए जा रहे हैं। Have you ever wondered? चलिए आपको बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, काफी हो हंगामा हुआ। उन्होंने शुरुआत में आरएसएस का नाम लिया, कई बातें ऐसी की जो इलेक्शन रिफॉर्म्स और एसआईआर से जुड़ी हुई नहीं थी, जिसको लेकर ऑब्जेक्शन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी जताया। उसके बाद राहुल गांधी ने एसआईआर और इलेक्शन रिफॉर्म्स पर जब बोलना शुरू किया तो सीधे उन्होंने कहा कि ये एक एंटी नेशनल कदम है और नियमों में जो फेरबदल किया गया है वो भी संशय में डालता है पूरे मामले को।